Today I'll be teaching you another topic. ठीक है, आज मैं सिस्टोस्कोपी पढ़ाऊंगी. सिस्टोस्कोपी, first of all you have to remember the genitourinary system. ठीक है, जब genitourinary system बोलते हैं तो you have to remember we are dealing with the kidneys. ठीक है, किडनीज के बाद क्या आते हैं? यूरेटर्स. यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा. ठीक है, सो दीज 4 important things you have to remember in genitourinary system. ठीक है, so yes, so you can see there is a picture. I hope everyone can see the picture. सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in genitourinary system, or we can say anatomy of urinary tract. ठीक है, urinary tract में क्या क्या आएगा? पहले तो kidneys है ना, where there the urine is formed. Then we have the ureters. Okay, renal pelvis is in the kidneys only. Then we have the ureter. The ureters, they are tubes. Okay, they are on both sides. The tubes which are transporting the urine. ये जो यूरिन फॉर्मेशन है किडनीज में वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये कहाँ जाते हैं? इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, सो ये जो ट्यूब्स है द ट्यूब्स दैट आर फंक्शनिंग आर कॉल्ड यूरेटर्स. फिर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर्ड हो जाता है. स्टोरेज ऑफ यूरिन और कलेक्शन ऑफ यूरिन, इट इज इन द यूरिनरी ब्लैडर. फिर उसके बाद okay, when the urinary bladder full हो जाते हैं, ठीक है, when the urinary bladder is full, then messages sent हो जाते हैं to the into the CNS. ठीक है, neurological system. फिर वहाँ पे messages आते हैं कि bladder is full, so you have to open the sphincters. ठीक है, 2 sphincters होते हैं, एक है internal sphincter और दूसरा है external sphincter. ठीक है, तो दिस स्पिंक्टर्स, ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा और फिर जो भी यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में वो निकल जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा. ओके, सो इट इज थ्रू द यूरेथ्रा दैट द यूरिन इज कमिंग आउट एंड इट इज गोइंग excreted out into the commode of the toilet. ठीक है, so these are the you can see these are the anatomy of the urinary tract or the genitourinary system. Yeah. So why am I teaching you about why am I teaching you about the urinary tract? क्योंकि हम cystoscopy कर रहे हैं. Cystoscopy has a connection with the urinary bladder. ठीक है, तो what is cystoscopy? Cystoscopy, it is the examination of inside the bladder. ठीक है, अगर हमें देखना है कि ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन्स है, स्टोन्स फॉर्मेशन है या नहीं, या कोई भी फॉरेन बॉडीज हैं, या कोई भी इन्फेक्शन है, या कोई भी पस कलेक्शन है, और एनी abnormality inside the urinary bladder. ठीक है, ये रहा. Okay, this yellow color. So if there is any abnormality, if there is any tumors or if there is any stones formation, ठीक है, तो फिर कैसे हम विजुअलाइज कर लेंगे, कैसे हम डिटेक्ट कर लेंगे? दिस इज बाय द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोपी. ठीक है, सो सिस्टोस्कोपी इट इज द प्रोसीजर ऑफ विजुअलाइजिंग और प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेटिंग द ब्लैडर, द इनसाइड ऑफ द ब्लैडर. ओके, एंड द इंस्ट्रूमेंट, ये जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप. ठीक है, सो यू कैन सी हियर. Okay, so there are 3 pictures. You can see this. Okay, so this is a female patient. Okay, so the cystoscope in female patient, it is inserted through the urethra. Okay, just above the vagina, and in males, it is directly inserted through the penis. Okay, so the cystoscope will be inserted to the penis and it will go directly into the bladder. Okay. So here also, okay, so this is a female patient. So the cystoscope will be inserted through the urethra. Urethra is just ये vagina की बस ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर. So that is the urethra. Then we have the vagina, then the anus, okay, and the rectum. So the urethra, from the urethra जहाँ हम catheter insert करते हैं ना, urinary catheter, Foley's catheter. From there only we are inserting the cystoscope.
ठीक है, तो फिर वहां से हम इंसर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली हम जाएंगे कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर. Okay, so this is cystoscope. Okay, so we have to make sure, ठीक है, whenever we do cystoscopy हमें ध्यान रखना है कि bladder full होना चाहिए. ठीक है, so for female and males are you can see the here also you can see the female and this is a male. Okay, so if females we are inserting to the urethra and directly into the bladder. In males we are inserting through the penis. Okay, inside the penis there is a urethra, so directly into the bladder. So the instrument is called as cystoscope. Okay. Then एक है cystoscopy और दूसरा है urethroskopy. Urethroskopy, ठीक है. Urethroskopy और also known as ureterorhinoscopy, URS. ठीक है. Uteroscopy और ureterorhinoscopy same. ठीक है, same meaning. It is the examination of inside of the upper urinary tract. ठीक है, अगर हमें और ब्लैडर के और ऊपर हमें विजुअलाइज करना है, अगर हमें यूरिटस विजुअलाइज करना है, एग्जामिन करना है, या हमें किडनीज को द रीनल पेल्विस उसको एग्जामिन करना है, या कैलिक्सिस को भी एग्जामिन करना है, तो हम कौन सा प्रोसीजर यूज कर लेंगे, दैट इज द यूरिट्रोस्कोपी. ठीक है, सो इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ इनसाइड, okay, of the upper urinary tract that includes ureters. Okay, includes the ureters, it includes the renal pelvis of the kidney and the calyxes of the kidneys. ठीक है, अगर कोई भी stones है, stone formation in the ureters, ठीक है, so we want to identify, we want to detect, we want to confirm कि हाँ patient को stones हैं inside the ureters. ठीक है, left side है या right side ureters, then we can do procedure ureteroscopy. ठीक है, so you can see here also. Okay, so with the help of uteroscope also we can remove the stones also. Okay, we can do the surgical procedure with ureteroscopy. ठीक है, साथ साथ में भी कर सकते हैं. Okay, so these are the pictures here, so you can see. Okay, so this is a stone inside the ureter. Okay, you can see the stones formation. Okay, the white color, you can see that is the these stones. Okay, so we can do procedure, दोनों procedure कर सकते हैं, uteroscopy भी साथ साथ में and removal of the ureters. ठीक है, अगर हमने visualize कर दिया कि ओ कि left side में stones है, ठीक है, so we can at the same time we can remove the stones. So you can see the last picture, A, B, C, D, E, F. So in the A there is stone formation in the ureters. Okay, B, C, D. D also, here we are trying to remove the stones. ठीक है, removal of stones procedure है. And F you can see the ureters are clear, इसमें कोई भी stones नहीं है. Okay, so we can do ureteroscopy with the surgical removal of ureters. Is this clear with everyone? किसी को doubt है? Okay, so the instrument that we use in uteroscopy is called as ureteroscope. Okay, so ये याद रखना. In cystoscopy, the instrument, the device we call it as cystoscope. In uteroscopy, जो device हम use कर रहे हैं उसका नाम है uteroscope. Okay, okay, so coming to the device, ठीक है, the instrument that we are using. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टोस्कोपी में एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम है सिस्टोस्कोप. इट इज अ लॉन्ग थिन इंस्ट्रूमेंट. Okay, it is a very long and thin instrument with an eyepiece on the external end and has tiny lens. Lens किसके लिए यूज करते हैं? कैमरा के लिए, कैमरा लेंस. ठीक है, एक छोटा सा टाइनी कैमरा लेंस है and a light at the end that is inserted into the bladder. तो ये जो एंड है ना, जो टिप पे, ठीक है, at the tip of the tube there is a camera lens, a small camera lens, and there is also a light. ठीक है, so the cystoscope is inserted into the patient's urethra. पहले ठीक है, we have to insert it through the urethra
and the small lens will magnify the inner lining of the urethra, the bladder, allowing to see the hollow bladder. Okay, so with the help of cystoscope, we are able to see the condition of the urinary bladder. So the first step, what to expect during a cystoscopy? So the procedure here, first step is thin tube is inserted into the urinary opening, that is called the urethra. ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है? ट्यूब इज थ्रेडेड थ्रू द यूरेथ्रा, धीरे धीरे और इंसर्ट कर लेंगे, इट विल गो डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर. Then third step is small camera shows the doctor a live video from inside the urethra and the bladder. जो internal condition है, internal structure है of the urethra and also the bladder, we will see in the monitor screen. ठीक है. And the fourth is a tool attachment can also take tissue sample from the biopsy. ठीक है. So इस tube से, इस cystoscope से we can insert another tube, okay, a very thin tube, and we can insert it inside. अगर कोई भी stones है, कोई भी foreign body है, अगर tumor है, तो हम tissue निकाल सकते हैं. Okay, so for sample, this is called biopsy. ठीक है. So we can do biopsy also with cystoscope. ठीक है. So is this clear with cystoscopy and cystoscope? Okay, so in cystoscope there are two types. Okay, there are two types of cystoscope. एक है rigid, मतलब rigid का मतलब है fixed, standard. ठीक है, it is fixed, it is straight. और दूसरा क्या है? Flexible. ठीक है, flexible, ये जो tube है that is flexible. It can go anywhere, right or left. Okay, लेकिन ये जो rigid वाला rigid cystoscope है, it is straight. Okay, so it will go directly into the urinary bladder. ठीक है. So we prefer to use flexible cystoscope. अगर हमें यहाँ वहाँ और explore करना है, we want to explore how much the tumor is spreading, so we can use flexible cystoscope. I mean flexible cystoscope. ठीक है. So these are the two types of cystoscope. Now coming to the ureteroscope. Ureteroscope, it is, जैसे मैंने बोला है, ये it is an instrument where we use in the procedure of uteroscopy. ठीक है. So a uteroscope, like a cystoscope, is an instrument for examining the inside of the urinary tract. तो ये जो uteroscope है, ये हम क्या visualize कर रहे हैं? Ureters, then और ऊपर जाओ, it will go into the kidney pelvis, or the renal pelvis and the calyxes. Okay, if you want to identify if there is any tumor, if there is any pus collection, infection inside the kidneys, then we can use ureteroscope. Okay, or if there is any stones formation in the kidneys, stone formation in the ureters also, kidney stones है, तो हम ureteroscope कर सकते हैं. Okay, with the help of ureteroscopy, okay, with the instrument ureteroscope, we can remove the stones. Okay, so the uteroscope is longer. Okay, ये जो ट्यूब है ये बहुत ही लंबा है, and it is very thinner than cystoscope. याद रखना. ठीक है. cystoscope की जो ट्यूब है उससे और भी पतला है. ठीक है. And it is used to see beyond the bladder into the ureters, the tubes that carry the urine from the kidney to the bladder, and also renal pelvis and calyxes. So here we are observing three things: ureters, renal pelvis and renal calyces. Okay, this is an uteroscope. Cystoscopy, we are visualizing urethra and bladder. ठीक है, बस दो चीजें हम visualize कर रहे हैं in cystoscopy. ठीक है. So is this clear between cystoscopy and uteroscopy? किसी को doubt है? Anybody has any doubt? No, ma'am. Okay, so even uteroscope also there are two types. एक है rigid और दूसरा है flexible. So the most preferred, जो सबसे common use वाला uteroscope है, that is a flexible. Okay, because we can we can explore more. Okay. So when does the patient require cystoscopy? What is the indication for cystoscopy? ठीक है. कौन कौन सी condition, कौन सी disease condition हम cystoscopy
प्रिफर कर सकते हैं. नंबर 1, इफ पेशेंट इज हैविंग फ्रीक्वेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है. सो वी वांट टू आइडेंटिफाई कि मतलब क्या रीजन है, व्हाट where there is infection. Okay, so we can do cystoscopy. Then if patient is having blood in the urine, उसको बोलते हैं hematuria, है ना. Hematuria is blood in the urine. अगर patient complain करे कि I'm having urine, there is blood in the urine, ठीक है, तो फिर हम cystoscopy प्रोसीजर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इंजरी हुआ है, ठीक है. यूरेथ्रा में इंजरी तो नहीं है, या ब्लैडर में तो इंजरी नहीं है, और बिकॉज ऑफ एनी फॉरेन बॉडी दे कैन बी डैमेज्ड टिश्यूज. सो वी वांट टू आइडेंटिफाई, हमें डिटेक्ट करना है, विजुअलाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. व्हाई पेशेंट इज हैविंग ब्लड इन द यूरिन, सो वी कैन डू सिस्टोस्कोपी. Third, a frequent and urgent need to urinate. ठीक है, बार बार patient wants to pass urine. Okay, what is it called? Urinary incontinence. ठीक है, so patient is having urine incontinence. So we can identify the problem by performing cystoscopy. Then unusual cells found in urine sample. If patient is having any tumor in the bladder, okay, tumor in the urinary bladder, so we can do cystoscopy. Patient is suffering from any painful urination, जब urine pass करते तो there is pain, okay, chronic pelvic pain. Okay, so in that case also we can do cystoscopy to identify the problem. If there is any urinary blockage, okay, blockage in the urethra, okay, blockage if the internal sphincters or the external sphincters muscles, they are not there is any damage, or if they are not functioning well, तो हम cystoscopy कर सकते. Then patients, if there is any stones in the urinary bladder, ठीक है, identify करना है what is the size of the stone, okay, so we can do cystoscopy. And unusual growth, polyp, tumor in the bladder. Okay, so these are the indications when we should do cystoscopy. ठीक है. Then when does the patient require cystoscopy? हो गया. अब आते हैं ureteroscopy. ठीक है, when should we do ureteroscopy? That is to identify the ureters, identify the to examine the ureters, to examine the kidney pelvis and kidney calyxes. Okay, in patients suffering from stones in the ureters. ठीक है, if patient is suffering from stone formation in the ureters and in the kidneys, अगर kidney में stones है या ureters में stones है, ठीक है, so we can do ureteroscopy. Then if there is any urinary blockage caused by abnormal narrowing of the ureters, अगर वो जो tubes है ureters अगर बहुत ही narrow हो जाते हैं, okay, there is stricture or narrowing of the ureters. Okay, so that also to identify that we can do ureteroscopy. Okay, so here you can see there's a picture cystoscopy. This is cystoscopy to identify the urinary bladder. ये है rigid cystoscopy, ये है flexible cystoscopy. तो ये so I said that rigid का मतलब है fixed. ठीक है, ये it is not going to, the tube is not going left or it is not going right. ये सीधा direct urinary bladder पे चले जाते. Okay, so this is rigid cystoscopy and this is a flexible. So you can see it is flexible, है ना, जो tube है it is flexible. We can use it to explore more. ठीक है, अगर हमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाना है तो हम flexible cystoscopy use कर सकते हैं, because it is flexible. ये जो tube है जब हम insert करें ये flexible है. So this is cystoscopy procedure. And this is ureteroscopy procedure. You can see here, this is rigid ureteroscopy, okay, and this is flexible. So you can see flexible, it is going to the ureters, और ऊपर जा रहे, it is going into the renal pelvis and the renal calyxes. Okay, so you can see the pictures here also. Okay, so any doubt with cystoscopy and ureteroscopy? किसी को doubt है? Anybody has any doubts? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so
I will send the PowerPoint. Okay, so you can see there are many pictures I have added also. Okay, so you can see the pictures. Okay, so today I have covered two topics, that is cystoscopy and ureteroscopy. ठीक है, तो ध्यान रखना cystoscopy and ureteroscopy totally opposite है ना, they are different. सिस्टोस्कोपी हम विजुअलाइज कर रहे हैं यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, बस वहां तक. फिर अगर हमें और ऊपर जाना है तो फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर, यूरेट्रोस्कोपी. यूरेट्रोस्कोपी वी विल विजुअलाइज द यूरेटर्स, वी विल विजुअलाइज the kidneys also, the renal pelvis and the renal calyxes. अगर stones formation है kidneys में या stone formation है in the ureters, then we can identify by ureteroscopy and we can remove at the same time. हम remove भी कर सकते हैं, ठीक है. If there is any tumor, we can take a tissue sample, biopsy, okay, and send it for lab investigation. Okay, so is this clear about the two things, about the two procedures? I hope I hope it's clear to everyone. Yes, ma'am.